So, good morning, all of you. How are you doing today? Doing great? Fantastic. How is everything? Up to the mark? Great. So, welcome back to my channel, English Impact, and I'm your trainer and mentor, Prabhakar Sir. So, in today's tutorial, we are going to practice tongue twisters. Yes, and they are going to be quite popular tongue twisters. And tongue twisters are the great way to practice and improve your pronunciation. Yes, if you go for interviews, let's say you just want to work for multinational corporations, MNCs, in which you have to serve, you have to just talk to the clients and customers sitting in native English speaking countries. So industry like BPOs and multinational companies, especially software industry, so they just check how confident, how fantastic you are with tongue twisters. Yes, and they will just give you these tongue twisters to just read it aloud and practice all the words properly. So pronunciation आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए. So we are gonna cover very popular tongue twisters that you will find in the interviews, especially in the interviews of BPO industry, जहाँ पे आपको client और customers international मिलने वाले हैं. So ठीक है, उसमें they just try to figure out pronunciation कैसी है, कहीं MTI तो नहीं है. So what is MTI? Mother tongue influence. Yes, it's a big no for those who are willing to work in call centers and BPO industry. So बिल्कुल नहीं चलेगा, MTI बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. Pronunciation आपकी जबरदस्त होनी चाहिए. So stay tuned and let's go ahead. So yes, first one, Peter Piper. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where is the pack of pickled peppers Peter Piper picked? तो कुछ words हैं, उसको देख लेते हैं उसकी correct pronunciation क्या है. So Peter, if we talk about Americans, तो वो E को हल्का D pronounce करते हैं. Peter बोलेगा, Peter. City, कभी सुना है वो city नहीं बोलते. Okay, Americans. Okay, so Peter, ठीक है. City, party. Okay, in India we can find people, ठीक है, उसको peck बोलेगा. So it's not peck, pack. So Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where is the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Got it? चलिए, तो दो बार रिपीट करेंगे इसको. Great. So move to the next one. जैसा कि मैंने लास्ट वाले में बताया था. So it's not Betty, Gary. Betty Botter bought some butter, but she said the butter is bitter. Betty Botter bought some butter, but she. अब ये क्या है? C. No, not C, it's she. S-H-A. She. Betty Botter bought some butter. Butter. Not butter. Not butter. It's butter. Butter. So Betty Botter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter. चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कैसे फ्रेज को मर्ज किया है. If I put it, put और it को एक साथ. If I put it in my batter, अब ये क्या है? Batter, किसी चीज का घोल, batter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. It will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So it was better. Betty Botter bought a bit of better butter. So it was better. Betty Botter bought a bit of better butter. Better butter. Clear? So सारी pronunciation clear हो गई. It's butter, not butter, butter. Bitter. ठीक है? Bitter. Bought. Buy, bought. It's bought. Batter. अभी क्या है? Batter. B-A-T-T-R. Batter. Better butter. Clear? So move to the next one. How? देखिए, इंग्लिश में आपने कभी नोटिस किया हो, नेटिव्स को आप देखेंगे सो वो अपने मुंह को बहुत वाइड खोल के बोलते हैं. यस, और हम इंडियंस अपने जॉज का बहुत लिमिटेड यूज करते हैं. सो इंग्लिश को थोड़ा सा आप मुंह वाइड खोल के बोलेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हो जाएगी. इंग्लिश के जितने भी साउंड्स हैं वो थोड़ा
आपको जॉब्स को वाइड खोलना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा नेटिव्स बोलते कम, मुंह ज्यादा बनाते हैं, ऐसा, ठीक है, खासकर अमेरिकन। ऑस्ट्रेलियंस एक्सेंट बिल्कुल ठीक है, उनके जो वोकल फोल्ड्स हैं उसको बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा, ठीक है, बट अमेरिकन दे डू काफी मुंह बनाते हैं, ठीक है, और जॉस को वाइड खोल के बोलते हैं। सो इंग्लिश को हमेशा पहले तो whenever you are reading English, just read them aloud. Never read English in your mind. ठीक है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सो कैसे प्रोनाउंसिएशन सही होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, नहीं हो सकती जब तक आप साउंड ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मन में पढ़ेंगे, ठीक है। यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, सो यू विल हैव टू रीड अलाउड, यू हैव टू टॉक टू द पीपल, ठीक है, बोलना पड़ेगा, अदरवाइज नो, नहीं होने वाला। और जॉब्स को वाइड खोले, ठीक है। चलिए, सो हाउ मच, ये मच नहीं है, मच। हाउ मच वुड अ वुडचक chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Clear? Once again, चलिए एक बार और करते हैं। How much would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? How he would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood, as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Yeah? Move to the next one. Yes, आ गया, she का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए, now she has H है, it's not C है क्या? No. So she sells seashells by the seashore. She sells, यहाँ तो मैंने she बोला है, she sells seashells by the seashore. How can a clam in a cream can? Cream नहीं होता। Now you'll have to understand, मैंने cream बोला क्या? No, cream. So tongue को twist करके बोलना है, tongue twisters, ठीक है। So tongue को हल्का twist करके बोले, it's cream, not cream. So how can a cram in a clean cream can? Yes, next one. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Nice one. Sure. Next one. I saw Susie. Now ये क्या है? नाम है, ठीक है। So British, Americans, ठीक है, वहाँ पे इस तरह के ही नाम होते हैं। So I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. सब में SH है, so shoe shine shop. चलिए, clear? Next one. Susie works in a shoe shine shop. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Once again, Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Clear? चलिए, next one. Fuzzy wuzzy. Fuzzy wuzzy. Z sound. फजी जेड नहीं होता, मीडियम्स जेड बोलते हैं, बट एक्चुअली इट्स जी, जिब्रा, बट जेब्रा, जिब्रा, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जिब्रा। फजी वजी वाज अ बेयर, नॉट बियर। इंडिया में हम भालू को बियर बोलते हैं, तो बियर नहीं है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बेयर, चेरी बेयर, नॉट बियर। फजी वजी वाज अ बेयर, फजी वजी हैड नो हेयर, फजी वजी वाजंट फजी, वाज ही, क्लियर हो रहा है? फजी वजी वाज अ बेयर, Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Was he? Great. Next one. Can you can a can as a canner can a can? Can you can a can as a canner can a can? Next one. I've got a date. चलिए एक और चीज. One thing more. Natives जो है वो contractions बहुत ज्यादा use करते हैं. So always try to use contracted forms. In spoken English, especially in spoken English, try to use contractions. पूरा आप तोड़ के I have got कैसे साउंड कर रहे हैं? I've got. So if you want to sound fluent, ठीक है, तो contractions को यूज करिए, तोड़ के बड़ा, ठीक है, expanded form आप यूज करेंगे, you will never sound fluent, ठीक है। So contractions, natives बहुत ज्यादा contractions यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब
I have got बोलिए कैसा लग रहा है? I've got मैंने क्या किया? I have to एक साथ contracted form को use किया. I've got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. I've got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Nice one. Move to the next one. You know New York. You know New York. You need New York. You know you need unique New York. The correct pronunciation is unique. Syllable stress. ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा बोला है. आपको पता होना चाहिए कि syllable का stress किस word पे है. ठीक है, so unique. Now this is not unique. Unique. You know New York. You need New York. You know you need unique New York. ठीक है, syllable stress. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको करेक्ट स्ट्रेस पता होना चाहिए. इमीडिएटली बोलते हैं. नो, इट्स इमीडिएटली. क्लियर? आइडिया बोलते हैं इंडिया में. इट्स नॉट आइडिया. आइडिया. सो लास्ट वाले सिलेबल पे स्ट्रेस है. आइडिया. आइडिया. नॉट आइडिया. आइडिया. इमीडिएटली. यस, इमीडिएटली. चलिए, गॉट द पॉइंट. सिलेबल का स्ट्रेस आपको we will cover all these things. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन की MTI जिसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, so I'll start that series for you and we will cover all these things. चलिए, move to the next one. Go ahead. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. चलिए, next one. If a dog chews shoes, if a dog chews shoes, whose shoes does he choose? If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? Clear? I thought of thinking of thanking you. I thought of thinking of thanking you. चलिए, सब क्लियर है? 15 टंग ट्विस्टर्स हमने कवर किए इसमें. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चेक की, कुछ सिलेबल स्ट्रेस चेक किए. ओके, फ्रेजेस को कैसे मर्ज करना है. ठीक है, वर्ड्स और फ्रेजेस को मर्ज कैसे करना है. So you have to practice all these if you want to sound more fluent, confident, and especially for those who are willing to work in international processes in international BPO or multinational organizations, they must have good command over tongue twisters. So I've covered 15 tongue twisters today, and later in some videos I'm gonna do more. Okay, we are gonna do some more tongue twisters. All right, so that's it for today. Keep doing your practice. Don't forget to hit the like and subscribe button, and do share your comments as well. So that's all for today. Thanks for watching. Have a great day ahead.